Hi, good evening. This is Chef Sai Chand again for the second recipe, and I'm going on live with Amul with my S squad. I have Sundari here, Satya, Sukumar, Mohan, and Kannan here today to help with me. It's just that they have done an amazing setup, so I just wanted to give them a little credit for what they have done so far. So let's go into the recipe. As usual, I'm going to hand over the phone to Mohan, and then he will be handling all the questions and comments and everything. You can always talk to me through Mohan. He will be posting the questions, and then I'll try to answer everything pretty much. So over to you, Mohan. The setup. So guys, I hope you are following all the COVID regulations made by the government to control all this. So I'm going live, and then can we go live? Yes. Right. Aaj I'm going to make a very interesting recipe. Today the program is all about Taste of India, sponsored by Amul, and Taste of India में ना पूरा India cover होता है ना, so I'm going to cover the Karnataka region today. Because probably you have seen a lot of chefs from North India, and then my friend Naveen was live a few minutes ago, maybe a half an hour ago. He was live, and then he was making a beautiful ragi payasam from Karnataka again. So payasam के साथ तो वड़ा तो खा सकते हैं ना, तो साउथ इंडिया में तो हम खाते हैं. So I'm gonna show you a recipe from Karnataka that is very legendary. I mean, it is much older than our independence. The recipe originated in 1917. मतलब एक टाइम पे ब्रिटिश लोग खाते थे इधर इंडिया में, इतना पुराना रेसिपी. But I'm going to add a little tweak to the recipe, to make it a little bit more healthy, a little bit more unique and quirky. So I think the glove is too small, Sundari. You gave me your size, So it's very interesting. So the name of the recipe I'll be posting along with the video. So the name of the recipe is Maddur Vada. Maddur एक जगह है, जगह का नाम है कर्नाटका में, मांड्या रीजन से. क्या है ना, if people are traveling from Bangalore to Mysore or Mysore to Bangalore by train, they'll come across this place called Maddur. ये मेदुवड़ा, मधुवड़ा, मधुरवड़ा नहीं है, मद्दूर वड़ा फ्रॉम कर्नाटका. इसके पीछे ना एक छोटा सा स्टोरी भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा. व्हेन माय वड़ास आर फ्राइंग, आई हैव अ लिटिल टाइम, सो आई विल बी शोइंग यू दैट, आई विल बी टेलिंग यू द स्टोरी अबाउट इट. ओके, एक बढ़िया सा स्टोरी है इसके पीछे. देन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ द वड़ा केम इनटू दिस वर्ल्ड, राइट? सो लेट्स गो टू द रेसिपी टुडे. ये वड़ा जो है ना, एक्चुअली पकोड़ा का एक ट्वीक रेसिपी है. So I'll show you the ingredients right now. I have maida, I have some rice flour, रवा, सूजी, थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ बटर की भी यूज कर सकते हैं, तिल सीड्स एंड प्याज, हरा मिर्च, ग्रीन
कड़ी पत्ता चॉप किया हुआ, एंड जिंजर अदरक वो भी चॉप किया हुआ है, और थोड़ा सा धनिया पत्ता। कि मैंने लास्ट टाइम बोला था रेसिपी में कि हर रेसिपी में ना मैं मोस्टली बहुत सारे हर्ब्स यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये जो रेसिपी है मधुर वड़ा, बहुत सारे लोग ट्राई किए होंगे बैंगलोर से, पीपल मस्ट हैव ट्राइड इट। बैंगलोर से मैसूर जाने वाले बीच में पहले मिला करता था, अभी पता नहीं अगर मिल रहा है कि नहीं। तो या आई शो यू द रेसिपी, आई हैव शोन यू द इंग्रेडिएंट्स, नाउ लेट्स गो इनटू द प्रोसीजर। या So I'm taking a large bowl to mix these ingredients. अगर इसका ingredients आप देखेंगे ना, it's very much akin to the recipe of पकोड़ा, क्योंकि ये वड़ा ना एक्चुअली वड़ा नहीं है। Can you explain the measurements? मेजरमेंट्स ना मैं आपको I'll give you a written recipe according along with the post, and you can also find my recipe on the official Instagram account and official Facebook page of mine. तो ना मैं अभी ये करीब 200 ग्राम्स ऑफ ऑनियन ले लिया मैंने। थोड़ा सा इट्स नॉट वेरी फाइन, इट्स नॉट वेरी स्मॉल, नॉट फाइनली चॉप्ड ऑनियंस, क्योंकि अच्छा लगता है ना पकोड़ा में वड़ा में, जब बारीक काट के थोड़ा सा ऑनियंस ना थोड़ा जूसी क्रंची होता तो इट एड्स अ लॉट ऑफ फ्लेवर टू इट, राइट? सो आई एम जस्ट क्रशिंग ऑल दिस ऑनियंस टू ब्रिंग द जूसेस आउट। तो और थोड़ा सा हम ग्रीन चिली डाल देंगे टू मेक इट अ लिटिल बिट स्पाइसी, एंड थोड़ा सा कड़ी पत्ता, क्योंकि साउथ इंडिया है ना, साउथ इंडियन फ्लेवर थोड़ा लेके आना पड़ता है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग इज थोड़ा जिंजर। ये जिंजर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो फ्रेश जिंजर का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत बढ़िया होता है। तो थोड़ा जिंजर ऐड करेंगे, चॉप किया वाला जिंजर अदरक, और उसको थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं, हाँ थोड़ा सा, बाद में हम मिक्सचर को भी टेस्ट कर सकते हैं। नमक ज़्यादा मत डालना, अभी इसलिए डाला क्योंकि जैसे मैं ऑनियंस को मिक्स करूँगा ना, प्याज को नमक से मिक्स करते ही पानी की निकल जाता है प्याज का। तो जो वड़ा, जब हम उसका डो या बैटर बनाते हैं ना, वड़ा बैटर, तो इसमें ऑनियन का जो जूसेस है वो बहुत सारा फ्लेवर देगा वो बैटर को, राइट? तो मैं थोड़ा मिला रहा हूँ, अभी उसका जूसेस निकाल रहा हूँ। थोड़ा एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है इसमें वड़ा खाने से पहले, हाँ ना, बढ़िया सा रेसिपी करने से पहले थोड़ा बहुत तो एक्सेस चाहिए, ज़रूरत है। ये थोड़ा असाफोटिडा डाल रहा हूँ, हींग डाल रहा हूँ मैं। उसका जो हींग का जो स्मोकी फ्लेवर होता है ना, वो भी साउथ इंडियंस को बहुत पसंद है, क्योंकि हम हर चीज़ में हींग डालते हैं, रसम सांबार हर चीज़ में। या अभी हो गया हमारा मिक्सचर रेडी है। तो इसमें हम अभी एक दो चीज़ें ऐसे डालेंगे कि उसको थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए, ठीक है? तो आई एम एडिंग अ लिटिल फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड जो है ना, ये इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वीगन प्रोटीन। ये एंटायर रेसिपी कैन बी वीगन इफ यू अवॉइड लिटिल घी और बटर इन दिस, और थोड़ा सा चिया सीड भी, क्योंकि दोनों का टेस्ट ना बहुत न्यूट्रल होता है। तो दे ऐड अ लॉट ऑफ चिया सीड्स आल्सो आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो अगर फैट और मैदा का कार्बोहाइड्रेट्स एंड रवा का जो कार्बोहाइड्रेट, ये सब अगर रेसिपी में आ रहा है, तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड अ लिटिल प्रोटीन टू इट, सो आई एडेड अ couple of spoons of flax seeds and chia seeds to it. It's not the original recipe doesn't call for flax seeds and chia seeds, but I wanted to add it to make it a little bit more interesting, right? वो हो गया। तो नाउ थोड़ा सा तिल सीड्स, ज़्यादा मत डालना, क्योंकि वो भी वो एक by the way, these are toasted and kept aside for my convenience. तो ये एक चीज हो गया। So now if you look at the hand, it's all watery because I added some salt to the onions and herbs, right? तो थोड़ा सा उसका ये स्टार्ट हो गया, पानी निकल गया इसका अभी I'm gonna add all flour। तो क्या होता है ना, the juices get
add it to this dough. उसका फ्लेवर ही बहुत बढ़िया होता है. तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स का रिटर्न रेसिपी मैं पोस्ट करूंगा फेसबुक पेज में, अमूल का पेज में. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट विद अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. तो रवा को मिक्स कर दिया मैंने. नाउ आई एम गोना ऐड सम राइस फ्लावर. जो राइस फ्लावर है ना, makes it a little bit crispy. Most of my South Indian folks will agree with that. हर चीज में है ना थोड़ा ये डालने से थोड़ा तेल को ना ऑन कर लेता है. Right. तो जब तक ये बनेगा, we'll add some because the recipe calls for a little hot oil as well. Right. Chef, can we use oats? Definitely. I actually wanted to use oats. That's a brilliant question. Actually, yeah, you can actually use oats. But oats na, yeah, very good actually. But yeah, इतना भी ठीक नहीं करना चाहिए रेसिपी को कि it loses the authenticity of the recipe. So I kind of avoided it. अभी मैदा, if you look at this recipe, no, it is very much close to pakoda only. थोड़ा और प्याज बचा हुआ है मेरे पास, वो भी डाल देता हूँ. सो गाइस, अभी हम ये पकोड़ा के बाद ना ये मद्दूर वड़ा बनाने के बाद हम ये भी देखेंगे कि मद्दूर वड़ा के साथ कुछ और क्या कर सकते हैं उससे. ठीक है. अभी I have added pretty much all my ingredients. 2-3 बचा हुआ है. Let me add some chili powder, थोड़ा सा, because the chili powder, the spiciness of this recipe comes predominantly from green chilies. क्योंकि chop करके डाला ना, whenever you having a bite of that मद्दूर वड़ा, बीच में ना वो green chilies that will make your palate a little bit spicy. So you don't have to add too much of red chili powder to the recipe because the contribution of spiciness comes from green chilies in this recipe. लेकिन yeah, like I said, it's a very unique recipe, simple but unique recipe. Now my oil is getting a little hot. मैं तब तक ना थोड़ा सा बटर डाल देता हूँ. Clarified butter. It's nothing but ghee. Ghee is actually called clarified butter, right? तो अभी एक fancy clarified butter. तो मैं थोड़ा सा some clarified Amul butter unsalted. ठीक है, वो यूज कर लिया. So it adds a little unique flavor to this. At the same time, you can actually make the entire recipe with ghee also. But yeah, we don't want that much ghee in our. That the amount of ghee should be kept to minimum, right? तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसमें. Now I'm going to add a little warm oil, right? So when you're doing this, please be careful with the hot oil because for obvious reasons, don't burn your hands. Be careful with the hot oil. Now भी hot नहीं है, you just have to add a little warm oil. ऐसा नहीं कि बहुत एकदम गर्मा गर्म तेल डालने की जरूरत नहीं है. वैसे a little मोहन, लास्ट टाइम तो मैंने 1.5 घंटा यूज कर लिया, सबको पका दिया मैंने खाने के साथ. तो इस बार यू शुड जस्ट गिव मी अ हेड्स अप एट 3:15 or 3:20, so I can. It's 15 minutes over. 15 minutes already over. Very good. So guys, I have to speed up a little bit, I guess. मैं थोड़ा सा पानी डालता हूँ.
अगर आपको एक्सरसाइज जिम्स अभी बंद है, बट इफ यू आर मिसिंग योर जिम्स डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस रेसिपी. मेरा तो अभी डेफिनेटली बाइसेप्स तो बन रहा है. So yeah, so don't make it a little semi hard, soft kind of a dough. It doesn't have to be really hard also. But yeah, to mix it properly, we have to do this, right? 15 minutes हो गया हमारा. तो सिंपल रेसिपी, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा. Chef, why we use palm oil? Why do we use palm oil? Warm oil. वो warm oil क्यों ना? Easily mix होने के लिए. At the same time, it kind of develops a little bit gluten in the recipe ना, थोड़ा soft हो जाता है. ठीक है? तो just to make it a little bit नहीं है तो ये रवा, राइस फ्लोर ये सब डालने से ना डो थोड़ा सा it will become too hard. To make it a little bit, इसको ना fat ना shortening बोलते हैं. In our kitchen terminology, it's called shortening. Because जो मैदा का जो gluten develop होता है ना, तो उसको काटने के लिए you use fat to cut the gluten. तो तब ना easily it will break off. बड़ा तोड़ने के लिए ना आसान होगा. You won't have that chewy kind of a texture. So guys, I'm going to add one last ingredient which I wanted to add at the end, right? Little fresh coriander na, I wanted to use with the roots. Normally we use the leaves of coriander, hara dhania. At the same time we kind of ignore the stalks of coriander leaves. लेकिन जो उसका जो the stalks of coriander leaves ना, उसका taste ही अलग होता है. The flavor is much stronger, much predominant, and it adds a lot of very good flavor to the recipe, right? So yeah, so our dough is ready now. We'll go into the frying now. So yeah, our dough is ready. Now I think I can remove my gloves. ऐसे sanitize तो किया मैंने. Yeah, keep your kitchen clean all the time because yeah, it's very important. We are going to the second stage of the recipe, right? तो अभी बड़ा बनाने के लिए ना, when my grandma used to make this kind of vadas or anything like that, they would use a couple of plantain leaves, banana leaves ना, वो use करते थे. भी use कर सकते हैं. और hotels में क्या करते हैं? We use the polythene bags for that. So it is just to make the shape of the vada and then fry it. So I'm going to use the plantain leaves itself. So much effort, sir.
so much effort. It's actually the most simplest recipe. So guys, it's a make a sandwich out of this. So that is what it doesn't have to be very. जो amoeba shape होता है ना biology class में, we kind of maintain that. तेल गरम नहीं है. Yeah, we'll keep it. We'll make it and keep. We'll do our prep for now. So guys, while you are watching this video, you can share this recipe or the live session with most of your friends, and then don't have fun alone. Try it with your other friends, and then let them learn something. Let them see how fun working in a kitchen is, and how awesome these recipes are. While I'm cooking it, you can just share it. Now the oil is getting hot, so you can do that right now. So we'll make 6 vadas like last time. Last time we 6 बनाया था ना. Last time we made bread sandwiches. This time we'll make vada sandwiches. वो भी मद्दूर vada. So I wanted to tell you a history, right? So 1917 में जो मद्दूर रेलवे स्टेशन ना, रेलवे स्टेशन में एक बंदा था रामचंद्रा करके. रामचंद्रा नाम पे एक बंदा पकौड़ा बेचते थे. एक दिन ट्रेन थोड़ा जल्दी आ गया, तो ही वॉज नॉट रेडी नहीं थे. तो यू नो व्हाट ही डिड, तो पकौड़ा डालने से अच्छा व्हाट ही डिड वाज he made a little small vadas, right? So what happened in 1917, after almost 103 years of Indian history, we are still following that recipe, and even now Maddur vada has its own reputation, right? So a lot of people uses peanut and cashew mix as well to make it a little tasty. तो मैंने इसमें थोड़ा avoid कर लिया because I'm going to use this for the sandwiches. इसमें ज़रूरत नहीं है. We'll be making maddur vada as well. Now the oil is getting hot. So yeah, that is how the recipe started being a pakoda, and then it emerged as a very famous recipe from Karnataka. So a lot of people, when I told my friend that I'm going to do Maddur vada of Karnataka, she was very excited. She said that it has a lot of emotion towards it. The railway station of Maddur, while traveling from Mysore to Karnataka, it has a lot of emotions for a lot of people. So going through Maddur station and then going via Maddur and then having this vada, trying it all the time. It is a childhood memory for her, and then she shared it with me. So yeah, if you have any memory like that, you can share it with me as well. And then in the next session or in my Facebook live videos, like I will try to bring back your memories from the past, and then you can have a little nostalgic session in the next video. Yeah. Meanwhile, can you explain the ingredients again? See, the ingredients are simple. We have used refined flour, the maida, and rava and rice flour. I have added little ghee or a clarified butter and warm oil to the recipe, and green chilies, curry leaves, little til seeds, थोड़ा सा हिंग ऐसा फोटिडा, नमक,
thumb rule, golden color. You can just so. Should say I hope let the guest squad see how much. So now that the oil is hot, we'll just we are little bit we're tweaking the recipe a little bit. But as you can
sometime. Video. I'm live now. Live now. Thirty-three minutes. So guys, my vadas are ready. Sure. It's okay. So our radis are ready. Uh, Tomato and
So guys, our second batch of vadas with peanut and cashew are also ready. We'll go ahead with them. Our recipe, our live demo session has come almost to an end. So yeah, look at the color. You can use coriander or fried curry leaves for garnishing. So our authentic Maddur vada is also ready. Maddur vadas from Karnataka that I was talking about. So yeah, these are crispy. Let me show you how it is. It is very crispy. It is very crispy on the outside, and then it's very easy to break. The softness inside. See, that's how easily they are breaking. That is the reason why we added warm oil and ghee, right? So this is the shortening. So how easily they break, right? So the Maddur vadas are ready. And then the Maddur vada sandwiches that I told about, I've added some tomato and garlic, grated carrot and beetroot and coriander, and then I've secured the sandwiches with a wooden satay stick. So these are the sandwiches I was talking about. So yeah, thank you guys. So guys, this after showing you the recipe. So sorry for the interruption because of the network. So I have to talk to the Jio people, I guess. So yeah, so I have the Maddur vada sandwiches here, and then the authentic Maddur vadas. So now I'm signing off with my team, the S Squad. I have Sukumar and Sundari here and Kannant. So signing off guys. Thank you.